Okay, the next subtopic of this chapter is buffers. Buffers uh, is one part where questions are asked. Many types of questions can be asked based on buffers. We will understand the theory of buffers slowly, and then we will do the numericals. So today we won't solve numericals. We will just do the theoretical portion of buffers. We have completed acids, we have completed bases, we have completed salts, and so the next portion is buffers. So what is a buffer? Let's understand that. There are categories of buffers. Those also we have to understand. You can start writing. Okay, a buffer is a solution which resists a change in pH when a small amount of acid or base is added to it. That means if I'm adding some acid or if I'm adding a base to a buffer, then the pH of the buffer should not change significantly. Which means I am preparing a solution. I am preparing a solution which will resist change in pH. I want the pH of the solution to remain almost constant. I do not want the pH of the solution to change by a great amount. So I'm preparing a buffer. Now, very important part is that some people feel that the pH of a buffer does not change at all and the pH of a buffer remains constant. That's what some people feel. But that is not the case. That is not the case. So the truth is that the pH of a buffer will change if you add a small amount of acid or a base. But the change will not be very high. The significant change is not there. Maybe only by a small amount the pH will change. But it will not change to a very high extent. That is the first important point about a buffer. pH of a buffer remains almost constant. It is not exactly constant. It remains almost constant, or we can say that the change in pH that occurs is not significant when I'm adding some small amount of acid or base to the buffer. So there are two things here. First thing is that I should only add a small amount of acid or a small amount of base. Then after adding a small amount of acid or a small amount of base, I can see what has been the change in pH. Whatever is the change in pH will be a very small amount. It will not be a very high value. So the change in pH is not that high. And hence we can call that a buffer. So this does not mean that the pH will not change at all. It means that the change in pH will not be very significant, or it will not be a very large amount. The value by which the pH will change will only be a small value. Small value. Okay. Write down till here. This is the introduction.
Done till here? Right till here? Okay. Now let's understand the types of buffers one by one. The first category of buffers is acidic buffers. An acidic buffer is a mixture of two components. I mean, there are two necessary components, and then only we can call that buffer an acidic buffer. The component should be a weak acid. So first thing is that there should be a weak acid inside the mixture, and there should be a salt of that weak acid with a strong base. That means the salt of that weak acid should be such that the cation of the salt is a part of strong base. So first thing is that there should be a weak acid. Along with the weak acid, I should have a salt of that same weak acid. And the care that I should take is that the salt should consist of a cation, and the cation must come from a strong base. So examples, if I look at the first example, it's a mixture of two components. CH3COOH is one component. CH3COONA is the other component. These are the two components. As you can see clearly, CH3COOH is a weak acid and CH3COON is the salt. If you analyze the salt consists of Na plus. Na plus is the cation, and Na plus comes from NaOH, which means that the cation has come from a strong base because NaOH is a strong base. So this is an acidic buffer because it has a weak acid and a salt of that weak acid with a strong base. This salt is formed when CH3COOH reacts with NaOH. Hence we say that it is a salt where Na plus is the cation and Na plus comes from NaOH. So the cation of the salt must come from a strong base. This is an example of an acidic buffer. Another thing to be kept in mind is that this plus sign which you see in between, it just means that you have two components. Plus means and. Kindly don't think that there is some reaction between these two. Don't get confused just by looking at the plus sign. The plus sign indicates that you have two components present together. Since both of them are present together, I am using a plus symbol. So plus indicates and, nothing else. So plus just means that it's a mixture, nothing else. Plus just means it's a mixture. So an acidic buffer will have a weak acid and also it will have a salt of that same weak acid, but the cation of the salt must be from a strong base. Now, if I want to show some more examples of acidic buffers,
Then this is another example. Again, you see a weak acid and a salt of that weak acid with a strong base. Potassium comes from potassium hydroxide. Potassium hydroxide is a strong base. Okay, now I'm asking a question. Tell me whether it is a buffer or not. Is this an acidic buffer? Yes, because HF is a weak acid. HF is a weak acid, correct? And so this is an acidic buffer. NaF is a salt. The cation of NaF is Na plus. Na plus comes from NaOH. So this is an acidic buffer. Okay. What about this one? Yes, sir. Is this an acidic buffer? Nice, sir. No, sir. No, sir. What? Why? Acid is not HCl is a strong acid. तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? acid is not weak. Acid is not weak, which means that this cannot be called a buffer. Okay. Please note down this part. All of you note down this. Okay. Let's look at some more examples of acidic buffers. So these are all our examples of acidic buffers. Note down. What is the acid in the sixth example? HCl. No, sixth one. Not fifth, sixth. What is the acid in the sixth one? I mean, what is the name of the acid? We have done this in IUPAC nomenclature. Benzoic acid. Exactly. So this is benzoic acid, C6H5. See, whenever you see C6H5, this portion, that means you have this ring. This is called C6H5. Okay, this is called
C6H5. And now you have COH, so you will attach here COH. So this is benzoic acid. Benzoic acid is the acid in the sixth one. And the salt is what? This one is the salt. What should be the name of the salt? Sodium, because sodium is a cation. Benzoate, because it is a salt of benzoic acid. Sodium benzoate. Okay, now let's come to the formula for pH. pH of an acidic buffer. This is the formula for pH of an acidic buffer. Write down the formula. Okay, now this formula is called Henderson's equation. Henderson's equation, also called Henderson-Hasselbalch equation. Now, how did this formula come? Let's take an example. Then we can understand how this formula came. It's very simple. Okay. Take the example of this buffer. CH3COO, the first one. Take the example of this buffer. If you take the example of this buffer, what will happen? I can write here CH3COOH will be written in this manner, right? This is the dissociation of CH3COH. Then CH3COONA. This will undergo complete dissociation. Now, if I want to write down the expression for Ka, Ka for CH3COH is what? This. This is the expression for K. Right. Now, look at the anion. The anion is CH3COO minus. Who is the major contributor of CH3COO minus? I mean, who is the major source of CH3COO minus? Salt. Salt. Why? Completely dissociated. It undergoes complete dissociation. And as a result of common ion effect, can I say this part is common, and according to Le Chatelier's principle, this will be shifted backward, the dissociation of CH3COH, right? So the dissociation of CH3COH is suppressed because of common ion effect. So can I say that जितना CH3CO minus रहेगा वो majorly due to
CH3COO का ही आएगा। Yes, sir. तो उसको मैं एनायन ऑफ सॉल्ट बोल सकता हूँ, CH3CO माइनस इज एनायन, तो सीधा मैं उसको लिख दूंगा एनायन, ऐसा लिख सकता हूँ फिर मैं, और नीचे लिख सकता हूँ मैं एसिड। ये आ गया के का एक्सप्रेशन। इसको रीअरेंज करो एंड दोनों तरफ लॉग ले लो, तो फिर ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसको रीअरेंज करके देख लो एंड देन टेक लॉग, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, हेंडरसन्स इक्वेशन। Okay. Now you have to learn this formula. Okay, I'm asking a question, answer that question. Let's say I have a mixture of 0.05 molar CH3COO twice Ba, barium acetate, and I have 0.1 molar CH3COOH. My question to you is, what is the value of this ratio? What is the value of the ratio? Don't find out log, just tell me the ratio. One. How? Sir, BaCH3CO whole twice completely dissociates. So 0.1 molar of anion would be formed. Correct. So when CH3CO twice Ba undergoes dissociation, I can say that 2 into 0.05 molar of CH3CO minus will be formed. 2 into 0.05 is equal to 0.1. मतलब 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है CH3CO माइनस का, किससे आ रहा है? बेरियम एसिड से आ रहा है, तो वो 0.1 हो गया। 0.1 अपॉन एसिड का तो 0.1 ही है, तो 1। राइट, सो दिस इज अ बफर, और इसका जब मैं निकालूंगा पीएच, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 9 अपॉन एसिड ये जो है ये 1 आ जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल, अनायन ऑफ असॉल्ट है ये। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बेरियम एसिटेट जो मैंने दिया था उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। दिस इज बेरियम एसिटेट, कितना बोला था इसका? 0.05 मोलर, तो यहाँ पे लोग डाल देते हैं 0.05 मोलर, विच इज रॉन्ग। Why wrong? Because we don't want the concentration of salt, we want the concentration of the anion of salt. Anion चाहिए सर। सिर्फ anion का ही चाहिए।
ओके, सो दिस इज व्हाट हेंडरसन्स इक्वेशन। अब आते हैं प्रैक्टिकल, इसका यूज क्या है बफर का, क्या कब तक उसको बोलेंगे कि ये बफर जैसा काम कर रहा है। तो ये है इसका so an acidic buffer is effective. It is effective and useful, I can say, when this ratio lies between 0.1 and 10. Which ratio? This ratio, anion of salt upon acid. ये वाला जो रेशियो है, अगर ये 0.1 से 10 के बीच में है तो ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ही हम लोग बोलते हैं कि वो बफर इफेक्टिव है। इसको ऐसा एक कन्वेंशन या रेफरेंस की तरह ये वैल्यू को फिक्स किया गया है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो 0.1 to 10 एक रेंज फिक्स कर दिया प्रैक्टिकल यूज के लिए। तो अगर 0.1 to 10 है तो हम लोग बोलेंगे कि ये बफर काम का है, कि हाँ चलो ये बफर अभी भी बफर जैसा है। तो एनायन अपॉन एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 to 10 के बीच में होना चाहिए। Then only it is called a practically useful buffer. तो इससे क्या होगा, 0.1 to 10 जो ये वैल्यूज है, if I put 0.1 in Henderson's equation तो क्या होगा, pH will be equal to pKa plus log, look at this equation again। अब इस रेशियो को मैंने अगर 0.1 डाल दिया, log of 0.1 हो जाएगा, log of 0.1 ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, pKa minus 1, log of 0.1 is minus 1। Similarly, if I put this तो क्या हो जाएगा, pKa plus 1। कहने का ये मतलब है कि pH का जो रेंज है एसिडिक बफर का वो इस रेंज में होना चाहिए, मतलब pKa -1 से लेके pKa +1 तक। तो हम लोग बोलते हैं कि वो बफर एक प्रैक्टिकली यूजफुल बफर है। तो एक रेंज फिक्स कर दिया है कि इस रेंज में इसका pH होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इट्स प्रैक्टिकली यूजफुल बफर। तो pKa -1 से लेके pKa +1 तक pH का रेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बोला कि ये रेशियो जो है एनायन अपॉन एसिड का, दैट शुड बी बिटवीन 0.1 and 10। तो 0.1 to 10 इसको इंक्लूसिव मान लो, 0.1 और 10 को भी इंक्लूड कर दो। So 0.1 to 10, that is the range। So 0.1 to 10 क्या है, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एनायन एंड एसिड। तो इसके लिए ऐसा बोला गया है, an acidic buffer is effective and can be used for practical purposes when this ratio lies in the range of 0.1 to 10। And if I put 0.1 and if I put 10, then the range of pH becomes pKa -1 to pKa +1। तो वही यहाँ पे है, thus the pH of an acidic buffer lies within the range of pKa ±1। It is just like a reference fixed कि हाँ इस रेंज में होना चाहिए ताकि वो यूजफुल बफर कहलाए, कि हाँ ये काम करेगा, अच्छे से इफेक्टिव है। अगर pKa ±1 के रेंज में pH नहीं है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इट इज नॉट अ वेरी यूजफुल बफर, क्योंकि उसका pH फिर चेंज हो जा रहा है ज्यादा। तो ज्यादा pH चेंज नहीं चाहिए हमें, तो pKa ±1 ही हम लोग रेंज बताते हैं एसिडिक बफर।
Example, if I have acetic acid जिसका pKa 4.75 है, तो acetic acid and sodium acetate का एक mixture अगर that's an acidic buffer. So these two can be used to prepare a buffer solution. और ऐसा एक बफर सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है जो जिसका पीएच इस रेंज में लाई करेगा, किस रेंज में 3.75 से लेके 5.75 तक. मतलब क्या 4.75 minus 1 to 4.75 plus pKa minus 1 to pKa plus 1. pKa का वैल्यू आपको देके रखा है 4.75. So 4.75 minus 1 will be 3.75. 4.75 plus 1 will be 5.75. तो इस रेंज में जिस बफर का पीएच है मतलब वो इफेक्टिव बफर है. Please note down. यहाँ से नोट डाउन कर लो. Okay, done. Write down.
Okay. Now let's understand the mechanism of a buffer. Mechanism means what? How something is getting affected, or how a particular thing is functioning. So if I want to understand the mechanism of a buffer, that is the working of a buffer, how a buffer works and what happens when I add an acid or a base to a buffer. उसके अंदर फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर मैं कोई एसिड डाल रहा हूं बफर के अंदर तो क्या होगा उसके, मतलब एक बफर है एसिडिक बफर, और उस एसिडिक बफर के अंदर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूं, तो थोड़ा सा स्मॉल एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डाल दिया, क्या होने वाला है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज. सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट. मान लेते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग हम लोग डाल रहे हैं और वहां से x मोल्स ऑफ H प्लस आ रहे हैं. x मोल्स ऑफ H प्लस मतलब क्या? ये x मोल्स ऑफ H प्लस सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से जो मैंने अभी डाला है. जो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है बफर के अंदर, सिर्फ उसके जो H प्लस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? x moles of H plus ions have come from a strong acid added. The moment I add a strong acid, तो क्या क्या होने वाला है वो अभी हम लोग देखेंगे. So what are we analyzing? We are analyzing the effect of addition of a small amount of strong acid to an acidic buffer. Acidic buffer में हम लोग एक strong acid डाल रहे हैं. अब acidic buffer का example ले लेते हैं ये वाला, so that it's easier for us to understand the exact working. तो अगर ये एसिडिक बफर माना तो जैसे मैंने पहले दिखाया था वैसे ये दिखा सकते हैं हम लोग. ये तो है ही एसिडिक बफर, तो इस तरीके से डिसोसिएशन को दिखा सकते हैं. Now when I am adding a strong acid to this, when I am adding a strong acid to this, तो क्या होगा? एसिड से H प्लस आयंस आने वाले हैं. कितने आने वाले हैं? तो मान लिया x moles of H plus ions are coming from the strong acid. तो क्या होगा देखो, the moment you add H plus ions, तो ये होने वाला है, ये CH3CO माइनस जो थे वो CH3CO minus will start reacting with H plus ions, thereby giving you CH3COOH. Can I say that ये H plus जो मैंने लिखा है ये वाला, this is nothing but it's coming from the strong acid added. Whatever acid I've added, let's say मैंने HCl डाल दिया या HNO3 डाल दिया, तो उससे जो H plus आ रहा है वो X moles है, और वही यहाँ पे लिखा है मैंने from acid added. अब जो तो बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. कौन सा बैकवर्ड? सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन. हाँ यस, वो अभी होगा. क्यों होगा? बिकॉज वी हैव एडेड H प्लस आयंस, तो इसलिए हो रहा है. अभी देखो
जो H प्लस आयंस ऐड किए मैंने, वो H प्लस आयंस कंज्यूम हो गए बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, H प्लस आयंस जितने भी ऐड किए बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, most of those H plus ions have been absorbed by CH3COO minus. As a result of that, ज्यादा H plus ions यूज हो जाने की वजह से थोड़ा सा बचा रहेगा, तो थोड़ा सा ही पीएच में चेंज आएगा। मतलब क्या, जो भी H प्लस आयंस मैंने बाहर से ऐड किए, HNO3 हो या HCl हो, जो भी एसिड ऐड किया है, जितने H प्लस आयंस आए थे, एक्स मोल्स आयंस आए थे, राइट, एक्स मोल्स, ये एक्स मोल्स में से काफी सारे यूज हो गए इस वाले रिएक्शन में, और इसके लिए ज्यादा कुछ इफेक्ट होगा नहीं पीएच पे, थोड़ा सा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो H प्लस आयंस ऐड किए गए थे वो तो कंज्यूम हो गए। अगर कोई चीज तुम डाल रहे हो और वो यूज अप हो जा रही है, तो मतलब उसका इफेक्ट नहीं रहेगा इतना। तो लेकिन वो एसिड ही फॉर्म कर रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में तो आएगा ना लॉग के। हाँ, बट यू थिंक दिस वे, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग केसी बोलते हैं। अब अगर केसी ज्यादा है, व्हाट डज दैट मीन? फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट जो है, आई विल यूज दैट वर्ड व्हिच आई हैव यूज्ड अर्लियर, ये वाला वर्ड मैं फिर से यूज करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सटेंट। तो एक्सटेंट किसका ज्यादा है, फॉरवर्ड का ज्यादा है कि बैकवर्ड का ज्यादा है? फॉरवर्ड का। एग्जैक्टली, क्योंकि केसी अगर ज्यादा है मतलब फॉरवर्ड का ज्यादा है। अब मुझे ये कैसे समझ में आया कि ये केसी ज्यादा है? यस, नॉट टेल मी दिस, हाउ डिड आई फिगर आउट दैट केसी ज्यादा है? इस वाले रिएक्शन का केसी ज्यादा है, ये कैसे समझ में आया? सर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एसिड तो बहुत ज्यादा है। नहीं, बहुत ज्यादा तो वैसे भी ऐड नहीं कर सकता ना, बफर का डेफिनेशन भी मैंने पहले बता दिया था ना कि थोड़ा सा एसिड डाल रहे हैं या थोड़ा सा बेस डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं डाल सकते। आई एम सेइंग हाउ डू आई नो दैट केसी फॉर दिस रिएक्शन इज वेरी हाई? आई एम आस्किंग अबाउट केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन ज्यादा है, ये मैंने कैसे फिगर आउट किया? क्योंकि अगर केसी ज्यादा है तो ही वो रिएक्शन आगे की ओर शिफ्टेड ज्यादा है। मतलब क्या, अगर कोई रिएक्शन का केसी बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट की ओर ज्यादा ड्रिफ्टेड है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट अनरिएक्टेड रहते हैं, जितना अनरिएक्टेड रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट केसी इज हाई। नाउ केसी इज हाई ये समझ में कैसे है? सर अगर एसिड ऐड करेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन में वो H प्लस का फॉर्मेशन सप्रेस होगा ना। नहीं, बट H प्लस आयंस जब तुमने ऐड किए हैं तो CH3CO माइनस भी तो काफी है ना, तो वो पहले उसको अब्सॉर्ब करेगा ना, पहले तो जो रिएक्ट हो सकता है उतना तो रिएक्ट करेगा। ओके सर। अभी जितना, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये रिएक्शन इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों मुझे पता है कि रिएक्शन अच्छे से हो रहा है और इसका केसी इतना ज्यादा है। अगर किसी रिएक्शन का केसी ज्यादा है मतलब क्या है, इफ केसी इज हाई दैट मींस बहुत ही कम अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेंट रिएक्टेंट्स रहते हैं, मतलब जितना मैंने H प्लस ऐड किया था बहुत ही कम अमाउंट उसका लेफ्ट बिहाइंड रहेगा। लेफ्ट बिहाइंड कितना रहेगा, बहुत छोटा सा अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड रहेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज इस रिएक्शन का केसी बहुत ज्यादा है, और केसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिएक्शन हाईली शिफ्टेड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड बहुत ही कम रहता है। तो केसी अगर ज्यादा है मतलब उस रिएक्शन में जो अनरिएक्टेड अमाउंट्स है रिएक्टेंट्स के वो बहुत ही कम है। को रिपीट कर सकते हैं केसी ज्यादा कैसे? केसी ज्यादा क्यों है वो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। आई एम आस्किंग यू ऑल कि हाउ डिड आई फिगर आउट कि केसी ज्यादा है? H प्लस का वैल्यू कम ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा ना। नहीं, बट केसी इज अ फिक्स्ड वैल्यू, वैसे भी केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशंस, राइट? वो तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि केसी क्या है, उस रिएक्शन का केसी ज्यादा या कम है, वो रिएक्शन का नेचर है और टेम्परेचर का नेचर। अब टेम्परेचर तो वैसे भी कांस्टेंट रखा है थ्रू आउट,
I am not changing temperature in this question or in any question for that matter in Common this ion chapter. effect. Hmm? Common ion effect. See, whatever you're saying is all with respect to concentration. Concentration कम करो बढ़ा दो, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस रिएक्शन का केसी ज्यादा क्यों है. Kc does not depend on concentrations. Kc does not depend on common ion effect. मैं सिर्फ Kc की बात कर रहा हूँ. How do I know that Kc is very high for this reaction? Kc depends on what? Only temperature, no? तो इसका Kc ज्यादा है, ये क्या समझ में आया? Because Kc does not depend on concentrations. So Kc इस वाले रिएक्शन का Kc बहुत ज्यादा है, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन कैसे? So simple logic. Let's go to mathematical part. Whenever we do questions on ionic equilibrium, और जहां तक अभी तक देखे हैं values, देखा है ना हमेशा K के values क्या रहते हैं? 1.8 into 10 to the power of minus 5, 1.6 into 10 to the power of minus 5 या 10 to the power of minus 6. मतलब क्या? जितने भी हम लोग questions करते हैं weak acids के ऊपर, सबके K के values ऐसे रहते हैं ना, 10 to the power of minus 5, 10 to the power of minus 6, ऐसा रहता है. Now, K is the dissociation constant. That is nothing but the Kc of the reaction where dissociation of acid is happening. K is also a form of Kc only, ना? लेकिन कौन सा Kc? ऐसा Kc जिसमें acid dissociate कर रहा है. तो 1/Kc. Exactly. तो मैं अभी जो reaction लिखा है, ये तो 1/Kc है ना? ये वाला जो है, ये एसिड का डिसोसिएशन नहीं है, ये उल्टा वाला है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, यानी ये कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ये 1/K हो जाएगा. अगर 1/K कर दिया मैंने, तो 1/K का मतलब क्या होगा? 10 to the power of minus 5 का रेसिप्रोकल will be 10 to the power of plus 5, यानी 1/10 to the power of minus 5 will become this. तो अगर मैं इस वाले रिएक्शन के केसी की बात करूं, तो ये 10 to the power of plus 5 के उस रेंज में है. 10 to the power of plus 5 is a high value. मतलब क्या? इस रिएक्शन का केसी ज्यादा है, 10 to the power of plus 5 केस में है. तो 10 to the power of plus 5 या 10 to the power of plus 4 ऐसा कुछ अगर केसी है, तो मतलब वो रिएक्शन हाईली, उसका एक्सटेंट जो है वो एक्सटेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का बहुत ज्यादा है. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट. सो एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा है अगर केसी ज्यादा है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 10 to the power of 5 या 10 to the power of 4 का अगर कुछ आ गया, तो मतलब वो काफी ज्यादा वैल्यू माना जाता है. 10 to the power of 4 हो, 10 to the power of 5 हो, 10 to the power of 6 हो. एंड सो जिस रिएक्शन का केसी बहुत ज्यादा है, तो उसका एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी काफी ज्यादा है, यानी जो अनरिएक्टेड अमाउंट्स है रिएक्टेंट्स के वो काफी कम है. तो H प्लस ज्यादातर यूज हो गए, जितने H प्लस आयंस ऐड किए थे उनमें से मोस्ट ऑफ देम हैव बीन यूज्ड अप बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन. तो हो गया, अगर यूज अप हो गया तो पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म. तो वही लिखा है यहाँ पे, most of the H plus ions have been consumed. As a result of this, there is no significant change in the pH of the solution. देखो थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ, ये मत बोलना कि चेंज नहीं होगा, चेंज तो होगा. डिस्टर्बेंस तुमने कुछ किया है मतलब थोड़ा तो चेंज होगा, बट ज्यादा नहीं है. वो अमाउंट जो है वो थोड़ा सा ही है. And the new pH can be calculated. जो मैंने बोला ना चेंज होगा थोड़ा सा, तो अभी तो न्यू pH निकाल सकते हैं हम लोग. This is the new pH. The new pH is given by this. अब ये कैसे किया? Very simple. Go back to the original equation. What was the original equation? This was the original equation. This is the original equation. pH का एसिडिक बफर का ये फॉर्मूला है, हेंडरसन्स इक्वेशन.
नाउ इनिशियली मान लेते हैं कि एनायन के N2 मोल्स थे और एसिड के N1 मोल्स थे, तो ऐसा हो जाएगा पीएच। ओके, अब क्या हो रहा है? As a result of this H plus which has been added, एनायन के कितने मोल्स थे? N2 मोल्स थे। एसिड के कितने मोल्स थे? N1 मोल्स थे। अभी जब मैंने H प्लस ऐड किया, कितना H प्लस ऐड किया? X मोल्स ऐड किया। तो ये X मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे इसके साथ, तो बचेगा कितना? N2 माइनस X। और एसिड कितना बनेगा? How many moles of acid will be formed in this? N1 plus X. नहीं, formed तो X होगा और पहले से N1 है, तो N1 plus X। फॉर्म तो X ही होंगे ना। हाँ सर, मेरा मतलब N1 plus X will be the total moles of CH3COOH now in the solution। ये X moles बने थे और CH3CO माइनस का क्या हो जाएगा? N2 माइनस X। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके X मोल्स तो रिएक्ट हो चुके हैं इस वाले रिएक्शन में, पहले N2 मोल्स थे, तो N2 से अगर X हटा दिया तो N2 माइनस X मोल्स बच गए अभी। तो so the new pH is this। This is the new pH। So this is how we can get the value of new pH of the acidic buffer। और ये जो न्यू पीएच और ओल्ड पीएच है ना, दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो देखोगे कि बहुत ही कम। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि a buffer is acting like a solution whose pH is almost constant। तो ये वाला पीएच और पुराना वाला पीएच, दोनों के बीच का वैल्यू जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। That is why we are saying that a buffer is maintaining almost a constant pH। Okay? से नोट करना। से नोट करना। हाँ नोट करो। कौन से इस पे जाना है? यहाँ पे प्लीज नोट डाउन। इसके थोड़ा सा हाँ, ये आपका हेडिंग है ना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू एसिडिक बफर। अच्छा, अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ कंसेप्चुअल, तो समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला जा रहा है तो ही वो बफर जैसा रह रहा है, काम कर रहा है। अब बताओ, मैंने अगर बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया इसमें, एक्स मोल्स के बदले में मानो मैंने डाल दिया 23 मोल्स, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या होगा अभी इस वाले रिएक्शन में? बताओ क्या होगा अभी इफ आई ऐड अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? तो एसिड जितना बन रहा है वो बढ़ जाएगा, यानी N1 plus 23 हो जाएगा। ओके, एंड सर H प्लस बहुत बाकी रह जाएगा। एग्जैक्टली, H प्लस बहुत बाकी भी तो रह सकते हैं ना। अगर H प्लस, तुमने अगर इतना ज्यादा H प्लस दिया कि इतना CH3CO माइनस है ही नहीं सोल्यूशन में, तो इतना ज्यादा H प्लस तुम डाल दोगे तो बफर रहा ही नहीं, क्योंकि CH3CO माइनस तो पूरी तरह से यूज अप हो जाएंगे और बाकी H प्लस भी रह जाएंगे कुछ, यानी वो पूरा H प्लस हर जगह हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, तो वो बफर नहीं रहेगा, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा। एंड ऑल्सो ये वाला बनेगा N1 plus X, बट वो बनना ना बनना अभी इतना सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके H प्लस आयन से भी डोमिनेट करेंगे सोल्यूशन को, क्योंकि ज्यादा हो गए H प्लस आयंस। सो इसके लिए बोलते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल के देखो तो ही वो बफर होगा, वरना वो बफर रहेगा ही नहीं अगर बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया तो। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट विल हैपन if a large amount of a strong acid is added to an acidic buffer? Yes, what will you answer? मतलब मैं ऑप्शंस तो नहीं दे रहा हूं, तो आप ही बताओ क्या आना चाहिए ऑप्शन में।
pH of the solution will decrease. हाँ वो तो केमिस्ट्री के टर्म्स में हो गया वैसे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आई एम सेइंग एज अ लेमैन इफ आई वांट टू एक्सप्लेन देन व्हाट शुड आई से व्हाट शुड आई गिव एज द जस्टिफिकेशन मतलब इफेक्ट की बात कर रहा हूं कि इससे ये होगा कॉन्सिक्वेंस व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस इफ आई से दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड हैज बीन एडेड टू एसिडिक बफर तो क्या बोलेंगे उसको कि हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है बताओ क्या बोलोगे उसको pH चेंज हो जाएगा. अब A large pH concentration of H plus will remain. pardon So, a large portion of H plus will remain unreacted. exactly a large amount of H plus ions will remain in the solution and hence the solution will behave like an acidic solution as a result of which pH will decrease वो finally वही आएगा लेकिन जो consequence है वो आपको ऐसे बोलना है कि a large amount of acid will be left unreacted and a large amount of strong acid will be dominating will be present in the solution and hence the solution will become an acidic solution and also someone wrote in the chat correctly कि अगर ऐसा हो गया तो CH3COOH का भी वापस dissociation minimize हो जाएगा क्योंकि CH3COOH भी तो है solution में तो ज्यादा एसिड HCl या HNO3 ऐड कर दोगे तो CH3COOH का डिसोसिएशन भी बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो जो सोल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो क्या होगा H प्लस Cl माइनस अगर HCl डाला है तो वो बफर नहीं रहा फिर ओके प्लीज नोट डाउन द मैकेनिज्म यहां से नोट डाउन करना है ना Now I'm making one statement. Tell me whether it is true or false. Statement में लिख रहा हूं यहाँ पे देखो क्या statement लिख रहा हूं. Moles of strong acid added is equal to moles of H plus added. Is this true or false? जरूरी नहीं है ना NF पे डिपेंड करेगा. हाँ सर. Exactly, जरूरी नहीं है क्योंकि अगर HCl या HNO3 डाला तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन अगर H2SO4 डाला है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है इसके लिए एसिड मत बोलो आप बोलो X मोल्स ऑफ H प्लस आयंस बुक्स में गलतियां हैं इसके लिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ये चीज काफी बुक्स में वो लोग क्या लिखते हैं लेट X मोल्स ऑफ स्ट्रांग एसिड बी एडेड तो दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इट So you should say let X moles of H plus ions be added. H plus ions बोलना जरूरी है एसिड मत बोल देना So you have understood. Very good. कॉपी कर लो अभी ये सब करना है अभी कॉपी की बाद में कॉपी करना है अभी आगे बढ़ूं मैं फिर अभी कर लेते ना नीचे चले जाइए. सर नीचे स्क्रॉल. हाँ बताओ कहाँ से करना है यहाँ पे हाँ सर वो रिएक्शन से करना है. हाँ लेट द एग्जांपल लेट द एसिडिक बफर बी दिस ये वाला एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है सर और नीचे स्क्रॉल.
Okay, done. Yes, sir. Okay, ये वाला लिख लो. The new pH is given by ओके. नेक्स्ट अभी क्या होगा, अभी बेस डाल के देखते हैं. Effect of addition of a small amount of a strong base to an acidic buffer. वापस मैं वही बोल रहा हूँ, OH minus ions written and let X moles of OH minus ions come from a strong base added. So don't say that X moles of base have been added. What will you say? You will say X moles of OH minus ions have been added. That means X moles of OH minus ions have come from the strong base added. Again, we can take the example of this same acidic buffer. सबसे ज्यादा common example तो यही है. अब ये होने वाला है. This is what takes place. Again, I can say that the equilibrium constant or Kc for this reaction is very, very high, extremely high. Now, why do I say that? I mean, how do I arrive at this conclusion? अब इनवर्स ऑफ Kb हो जाएगा. Kb, Kb मतलब याद रखो हम लोगों ने ये वाला रिएक्शन सर ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला है. एग्जैक्टली एनायनिक हाइड्रोलिसिस करते थे ना. एनायनिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसा होगा. दिस इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस. एंड हम लोग जब हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नाम की एक चीज होती है KH. And if you remember, KH was Kw upon Ka when we were doing hydrolysis of anions. अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूं, अब K का अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला ना 10 to the power of -5 के रेंज में रहता है, तो KH is 10 to the power of -9 के रेंज में. मतलब 10 to the power of -8, 10 to the power of -9, 10 to the power of -10 ऐसा कुछ रहेगा KH का. और ये जो रिएक्शन है दिस इज इसका Kc क्या हो जाएगा 1 upon KH. यस सर. वापस वही बात हो गई. KH अगर 10 to the power of -9 and 10 to the power of -8 है तो Kc will be 10 to the power of +8 और 10 to the power of +9, तो काफी ज्यादा वैल्यू है.
तो ऑलमोस्ट OH माइनस जो लेफ्ट अनरिएक्टेड रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है, थियोरेटिकली थोड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। इतना अगर ज्यादा ये केसी है रिएक्शन का, तो अगर कोई भी रिएक्शन का केसी बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत आगे की ओर शिफ्टेड रहेगा। आगे की ओर शिफ्टेड रहेगा तो मतलब क्या है, जो अनरिएक्टेड पोर्शन है वो बहुत कम है। सेम थिंग। सो जितने OH माइनस आयंस आए थे वो यूज हो गए लगभग सारे के सारे। वापस मुझे बताओ, अगर बहुत ज्यादा बेस मैंने डाल दिया तो क्या होने वाला है? What is the consequence if I add a large amount of base to this buffer? Large amount of OH minus will remain unreacted. Large amount of OH minus will be left unreacted, and so the solution will turn basic. Ultimately वो OH minus ही ज्यादा हो जाएगा। राइट, फाइन, लिख लो ये यहाँ पे, यहाँ से। राइट डाउन। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर। हाँ सर।
थोड़ा सा थोड़ा हाँ हो गया। Again, we can find out the new pH. New pH is this. अब क्या हुआ? anion का concentration बढ़ गया. तो अगर X moles react हुए हैं तो एसिड का कितना बचेगा? और टोटल इसका इतना हो जाएगा, क्योंकि N2 मोल्स थे किसके? इनिशियली इसके N2 मोल्स थे और एसिड के N1 मोल्स थे. तो X मोल्स अगर रिएक्ट हो चुके हैं तो OH माइनस X डालना था. So N1 minus X moles of CH3COH will be left behind, and N2 plus X moles of CH3CO minus will be present. तो ऐसा हो जाएगा.
ओके, तो इस तरीके से पीएच चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ये चेंज भी जो होगा वो ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है? देखो मैथमेटिकली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा जो टर्म है वो लॉग के बाद है, तो इसके लिए ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं आएगा। पहले n2/n1 का लॉग था, अभी इसका लॉग है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आफ्टर यू टेक द लॉग। ओके, तो एसिडिक बफर हम लोगों ने खत्म किया है। वैसे ही बेसिक बफर ही सिमिलर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक बफर में क्या क्या रहेगा। A basic buffer will be a mixture of weak base and a salt of that weak base with a strong acid. अब क्या होगा? अब जो ये मिक्सचर है उसमें एक वीक बेस रहेगा और उसी वीक बेस का सॉल्ट रहेगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। NH4OH is a weak base and NH4Cl is a salt. तो NH4Cl का जो anion है वो Cl माइनस है, एंड Cl माइनस कौन से एसिड से आ रहा है? HCl से आ रहा है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कंडीशन है कि जो anion है सॉल्ट का, that should come from a strong acid. I'm asking a question, tell me whether this is a basic buffer or not. Is this a basic buffer? Is this a basic buffer? No, sir. HCN is a weak acid. Exactly, this is not a basic buffer. क्योंकि इसका जो anion है वो HCN से आ रहा है और HCN is a weak acid. तो जल्दबाजी में क्या होता है ना, ये NH4OH और NH4CN दोनों देख के हम लोग बोल देते हैं चलो वीक बेस है, वीक बेस का सॉल्ट भी है तो ये बफर है, बट बी केयरफुल, ये बफर नहीं है। Okay, another concept, if I compare these two, now I have told you that HI is a stronger acid than HCl. So Cl minus will be a stronger base than I minus. Why? I have already discussed this. If there is a acid, I mean if there is a strong Conjugate acid, acid, conjugate base वाला. हाँ, conjugate acid conjugate base में, conjugate acid एंड conjugate base में क्या हो जाता है? ऑर्डर उल्टा हो जाता है। मतलब क्या? अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका conjugate base वीक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका conjugate acid वीक होगा। कहने का क्या मतलब है? HI is a stronger acid than HCl, so conjugate base of HI will be a weaker base than Cl minus, so Cl minus is going to be a stronger base than I minus. Now using this concept, याद रखो अभी एक चीज, स्टेबिलिटी
is inversely proportional to basic strength. मतलब क्या? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा. अब बताओ Cl minus and I minus say which is more stable? I minus. Cl minus and I minus say which is more stable. तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा? जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा. तो बेसिक स्ट्रेंथ कम किसका है यहाँ पे? I minus का है. So I minus is going to be more stable than Cl minus. So please keep this in mind. So stability is inversely proportional to basic strength. सर एसिडिक स्ट्रेंथ तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसका एसिडिक स्ट्रेंथ? स्टेबिलिटी ही. मतलब सर अगर स्टेबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाँ बट वो हाँ दैट इज ओके बट देन हम लोग यहाँ पे Cl minus and I minus को कंपेयर कर रहे हैं. हम लोग HCl और HI को कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना. तो वो कंफ्यूजन मत रखो. इसके लिए बेटर ये होगा कि यही लिखो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ. वैसे ही अगर H2O और H2S की बात करें व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? H2S. Obviously, right? H2S is a stronger acid than H2O. Water the neutral है. So conjugate base of water is going to be stronger than this. So OH minus is a stronger base. Which is more stable, SH minus or OH minus? SH minus. So SH minus is more stable than OH minus. Okay, so ये सब बताना चाहिए. In the next lecture, we will finish basic buffers and numericals based on buffers. आज हम लोगों ने एसिडिक बफर पूरा कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक बफर्स एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे. सर बफर्स के बाद और कितना बाकी है?